आज हम CS302 डिजिटल लॉजिक्स एंड डिज़ाइन के सॉल्व MCQs के साथ हाजिर हैं। फन टर्म के लिए हमने एक मेगा फाइल बनाई है, ठीक है। इसके अंदर जो लेक्चर कवर हैं 23 से 45 लेक्चर जो हैं वो कवर हैं और 40 सॉल्व MCQs हैं। तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा इन MCQ से। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है। डिजिटल सिस्टम यूज स्विचेस टू डैश वैल्यूज एंड टू कंट्रोल द डैश। इनपुट टू इनपुट है, इनपुट वैल्यूज टू आउटपुट है, आउटपुट है वैल्यूज टू आउटपुट है, या नन ऑफ दीज है। इनमें से यह कोई भी नहीं है, ठीक है। तो एप्लीकेशंस ऑफ SR लैच। डिजिटल सिस्टम यूजेस switches to input values and to control the output. For example, a keyboard uses 10 switches to enter decimal number 1 to 9, ठीक है। 10 decimal numbers है। When a switch is closed, this switch contact physically vibrate or bounce before making a solid contact. The switch bonus causes the voltage at the output of switches to vary between logic low and high for a very short duration before it settle to a steady state. तो इसके अंदर था इनपुट वैल्यूज एंड टू कंट्रोल दी आउटपुट। ऑप्शन जो यहाँ पे 2 है, इनपुट वैल्यूज एंड टू कंट्रोल दी आउटपुट्स, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 2। The 74LS279 IC has dash SR, 1 मिनट बैक चलते हैं थोड़ा सा। चलिए 74LS279 IC has dash SR latch which can be used independently। 1 है, 2 SR है, 3 SR है, 4 SR। The SR NAND gate based latch is available in the form of an integrated circuit. The 74LS279 IC has 4 SR latches which can be used independently। ज़्यादा ना वो 4 जो SR latches को यूज़ करता है। तो डी वाला ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट लाजमी किया करें, क्योंकि हमारी इतनी एफर्ट होती है कि हम इतनी मेहनत से आपकी हार्ड वर्किंग से ये MCQs बनाते हैं, ठीक है, लेक्चर्स में से, ठीक है, बुक में से। तो आप हम इतना कर दिया करें कि सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें वीडियो को और शेयर कर दिया करें, ठीक है। तो अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करते हैं, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर रेगुलर जो क्विज़ेस आते हैं वो भी हम अपलोड करते हैं, असाइनमेंट्स भी, GTPs भी हैं। और इस तरह जो मेगा फाइल्स हम मिड टर्म के हवाले से भी की थी और ये हम फाइनल टर्म के हवाले से कर रहे हैं। और बुक्स के भी मैंने फाइनल टर्म के जो MCQs हैं वो मैंने अपलोड कर दी हैं, तो सब्सक्राइब लाजमी करना। क्वेश्चन 3 है। इफ़ द S and R input of the gated SR latch are connected together using a dash gate, AND gate है, NOT gate है, NAND gate है and X NOT gate है। The gated D latch. If the S and R input of the gated SR latch are connected together using a NOT gate, then there is only a single input to the latch. The input is represented by D instead of S or R. The gated D latch can either have D set to 1 or 0 or 1. Thus, the 4 input combination applied at the SR input of an SR latch reduced to any 2 input combination. तो इसके अंदर जो हमारा यूज हो रहा है गेट्स वो हो रहा है नॉट गेट। ओके, ऑप्शन जो 2 है नॉट गेट, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फ्लिप फ्लॉप्स आर डैश बाईस्टेबल डिवाइसेस नोन एज बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। सिंक्रोनस बाईस्टेबल डिवाइस है या एसिंक्रोनस है। Edge triggered flip flop are synchronous bistable device known as bistable multivibrator. Flip have a clock input instead of a simple enable input as discussed earlier. The output of the flip-flop can only change when appropriate input are applied at the S and R input and clock signal is applied at the clock input. Flip-flops which enables input can change their state at any instant when the enable input is active. Digital circuits that change their output when the enables input is active are difficult to design and debug, as different parts of the digital circuit operate at different times.
तो इसके अंदर जो डिफिकल्ट डिज़ाइंस होती हैं और डिबग्स होती हैं वो इसका पार्ट होती हैं। तो फ्लिप फ्लॉप्स आर एसिंक्रोनस टू वाला ऑप्शन है, बाइस्टेबल डिवाइसेस नोन एज बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स। एसिंक्रोनस इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. There are dash types of edge-triggered flip-flop are generally used in digital logic circuit. One types of edge-triggered, two types हैं, three types हैं या four types हैं. The low to high or high to low transition of the clock is considered to be an edge. Three different types of edge-triggered flip-flops are generally used in digital logic circuits. जो डिजिटल लॉजिक सर्किट्स के अंदर जो फ्लिप फ्लॉप यूज हो रही हैं जनरली वो थ्री टाइप्स की हैं, डिफरेंट टाइप्स की। फर्स्ट कौन सी है? एस आर एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है, डी एच है और जे के एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है। ईच फ्लिप फ्लॉप हैज़ टू वेरिएशंस, ठीक है, दैट इज इट्स एदर पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। पॉजिटिव और नेगेटिव इसके अंदर दो वेरिएशंस यूज होती हैं एवरी जो फ्लिप फ्लॉप्स। A positive as triggered flip flop change its state on a low to high transition of the clock। जो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है वो हाई टू लो ट्रांजिशन ऑफ द क्लॉक करता है, ठीक है। जो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है फ्लिप फ्लॉप चेंज इट्स स्टेट, स्टेट को चेंज करता है ना हाई टू लो की तरफ, हाई टू लो ट्रांजिशन ऑफ द क्लॉक। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनता है वो ऑप्शन 3 है, थ्री टाइप्स ऑफ एज ट्रिगर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. The input signal maintained at the flip-flop input has to be maintained for a dash time after the clock transition for the flip-flop. Maximum time, minimum time, fixed time, all of these. Hold time है, ठीक है। The input signal maintained at the flip-flop input has to be maintained for a minimum time after the clock transition for the flip-flop to reliable clock in the input signal. The minimum time for which the input signal has to be maintained at the input is the hold time of the flip-flop। तो हमारा जो आंसर बनता है मिनिमम टाइम आफ्टर द क्लॉक ट्रांजिशन फ्लिप फ्लॉप, ऑप्शन जो 2 है ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. A flip-flop consumes power during its operation is known as पल्स विड्थ है, पावर डिसिपेशन है, मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी है या एस आर लैच। पावर डिसिपेशन, a flip-flop consumes power during its operation. The power consumed by a flip-flop is defined by P is equal to VCC multiply LCC. The flip-flop is connected to positive 5 ports and it draws 5 milliamperes of the current during its operation. Therefore, the power of dissipation of the flip-flop is 25 milliwatt. मतलब 5 को 5 से उन्होंने मल्टीप्लाई किया तो वो होता है 5 मल्टीप्लाई 5 25। ओके, तो हमारा जो आंसर बनता है वो बनता है कंज्यूम पावर ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन के दौरान जो कंज्यूम करता है पावर को वो होता है पावर डेसिपेशन। ऑप्शन 2 ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. A multiplier based dash converter need to have stable parallel data. पैरेलल टू पैरेलल कन्वर्टर है, पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर है या सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर है या सीरियल टू सीरियल कन्वर्टर है। Data storage using D flip-flop. A multiplier based parallel to serial converter needs to have stable parallel data at its input as it converts it to serial data. Latches are used to maintain stable data at the input of the multiplier. The time required to convert number of parallel bits. A byte parallel data requires 8 bits storage and 8 clock are required to convert it into serial data। तो मल्टीप्लायर जो बेस करता है वो पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर करता है, ठीक है। पैरेलल टू सीरियल फर्स्ट वाला ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. मैक्रो प्रोसेसर यूज डैश बिट फ्लिप फ्लॉप्स टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए जो मैक्रो प्रोसेसर यूज करता है बिट कौन सी है? 2 बिट है, 4 बिट है, 3 बिट है या मल्टी बिट्स है। पैरेलल डाटा ट्रांसफर यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। Microprocessor use multi-bit flip-flops to store information. These multi-bit flip-flops are known as register, ठीक है। जो multi-bit flip-flops होते हैं उसको हम registers कहते हैं।
These registers, for example, can store data generated at the output of the ALU. The register can also be used to exchange or copy data. A register is a set of flip-flops connected in parallel to store multi-bit binary information. The clock input of all the flip-flops are connected together to allow simultaneous latching of the multi-inputs डाटा। तो जो मैक्रो प्रोसेसर यूज़ करता है वो मल्टी बिट्स को यूज़ करता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। तो ऑप्शन जो डी है मल्टी, ये इसका एक्यूरेट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। The flip-flops are reset to some dash state by using asynchronous input known as preset and clear inputs. Final states, initial states, middle states, या all of these. Asynchronous preset and clear inputs. The SR, JK and D inputs are known as asynchronous inputs. Asynchronous inputs के अंदर SR लैच भी आता है, JK फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह और D फ्लिप फ्लॉप्स भी। Input are known as asynchronous inputs because the output change when appropriate input value are applied at the input and clock signal is applied at the clock input. The flip-flops are reset to some initial state by the using asynchronous input known as preset and clear inputs. Since these inputs change the output to non-logic level independently of the clock signal, therefore these inputs are known as asynchronous inputs. इन inputs को हम asynchronous inputs कहते हैं। तो हमारा जो फ्लिप फ्लॉप्स सेट रिसेट्स हम इनिशियल स्टेट्स यूज करता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो 2 है इनिशियल, ये इसका correct answer. Next question number 11. One of the most common problem in synchronous circuit in clock skew. True है या false? Clock skew को देख लेते हैं। One of the most common problem in synchronous circuit is clock skew. One type of clock skew occurs when the same clock signal arrive at different times at different clocks input to propagation delay, which causes different flip-flops to change state asynchronously, leading to unpredictable outputs. So one of the most common problems synchronic circuits clock skew, तो ये correct है, option 1 true, ये इसका आंसर। Next question number 12. A decade counter uses 4 flip-flops to implement the circuit, which counts up to dash unique states. 10 states, 11 states, 12 states या 13 states. मोड 10 काउंटर, डिकेड काउंटर। मोड जो 10 काउंटर उसको डिकेड काउंटर भी कहते हैं। अ डिकेड काउंटर यूजेस 4 फ्लिप फ्लॉप्स टू implement the circuit which counts up to 10 unique states 000 to 1001. The counter is resets when it counts to the next state 1010. The frequency of the output signal is 1 divided by 10th the input clock frequency. तो जो इसके अंदर यूज होती है, ठीक है, वो होती है 10 यूनिक स्टेट्स। ऑप्शन जो 1 है 10, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। The 74HC 163 is a dash bit synchronous counter, 4 bit, 16 bit, 32 bit and 64 bit. Integrated circuit synchronous counter. Instead of connecting a large number of flip-flops together to form large synchronous counters, counter circuits available in integrated circuit form can be quickly connected to form large counters. The 74HC163 is the 4-bit synchronous counter. फिगर जो 28.2 है लेक्चर के अंदर, द काउंटर हैज़ द फॉलोइंग पिंस: पैरेलल डाटा इनपुट्स D0, D1, D2 and D3, data output Q0, Q1, Q2 and Q3, positive as triggered clock signal, active low CLR input which resets the counter output to 40, active low load input which loads the 4-bit data applied at the counter's inputs. तो जो 74HC163 इज द 4 बिट्स काउंटर्स को यूज करता है, तो 4 बिट ए वाला ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। The up counter and down counter can be implemented as a dash counter circuit by adding some extra logic. डबल काउंटर सर्किट है, सिंगल काउंटर है, ट्रिपल है या नन ऑफ दीज है।
Up and down counter. The down counter is implemented by connecting the Q0 and Q1 outputs. The up counters and down counters can be implemented as a single counter circuit by adding some extra logics. In this circuit diagram, the up-down counter is configured to the count up or down by setting the down up इनपुट टू लॉजिक 1 और 0 रिस्पेक्टिवली। तो इसका जो आंसर बनता है वो बनता है सिंगल काउंटर सर्किट्स। ऑप्शन जो बी है सिंगल, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। The sequence of state through which the sequential circuit progresses when it is clocked is known as। स्टेट डायग्राम है, कॉर्नर मैप्स है, फ्लिप फ्लॉप ट्रांजिशन है या डिज़ाइन प्रोसीजर। State diagram. A sequential circuit state machine is described by a state diagram which show the sequence of state through which the sequential circuit progresses when it is clocked. The state diagram of the 3-bit synchronics up counter sequential circuits. इसके अंदर 3 बिट्स होती हैं, ठीक है, और ये एक स्टेट डायग्राम आपके सामने शो है और 3 बिट्स हैं, 1 2 और 3 होंगे, ठीक है, 3 नंबर्स आएंगे इसके अंदर और ये क्लॉकवाइज ऐसे मूव करेगी। यहाँ से यहाँ तक है, ये 001 है, फिर 010, फिर 011, फिर 100, फिर 101, फिर 110 और लास्ट पे 111 पे ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, और ये ऐसे क्लॉकवाइज मूव करेगी और 3 बिट्स इसके अंदर आएंगे। तो इसको हम कहते हैं स्टेट डायग्राम। ऑप्शन 1 जो है ये इसका करेक्ट आंसर। Next question number 16. The frequency of periodic signal is the number of cycles in a time period of dash second. 1 second, 2 second, 3 second, या many seconds. Frequency counter. A frequency counter is used to measure the frequency of an input signal. The basis for the operation of a frequency counter is counting of the clock pulse in a predetermined time interval. The frequency of periodic signal is the number of cycles in a time period of 1 second. कितना कह रहा है वो 1 second कह रहा है, ठीक है, टाइम पीरियड होगा इसका। तो ऑप्शन जो ए है 1, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17. The sequential circuit use a clock signal to change from dash state to the dash. One state to one state to many state, या one to other states, या many to many states. Clock synchronic state machines. The synchronics counters are the simplest form of clock synchronics state machine. The state machine is a generic name given to sequential circuits. The sequential circuits use a clock signal to change from one state to the other, and all the flip-flops are connected to a single clock signal. Therefore, it is a clock synchronic state machine. तो वो जो कह रहा है वो जो क्लॉक सिग्नल को चेंज करता है फ्रॉम वन स्टेट टू अदर्स। तो 1 टू अदर 3 वाला ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. द मेमोरी एलिमेंट ऑफ द डैश सर्किट इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग फ्लिप फ्लॉप्स। डिजिटल सर्किट्स, सिक्वेंशियल सर्किट्स, कम्बिनेशन सर्किट्स, या बोथ 1 and 2 डिजिटल और कम्बिनेशन दोनों ही आएगा। Flip-flops transition table. The memory element of the sequential circuit is implemented using flip-flops. The number of flip-flops used is determined by the total number of states. When there is a clock transition at the clock input of the flip-flops, they change from their represent state to the next state. The flip-flop transition table lists all the possible flip-flops input combinations which allow the present state to change to the next state on a क्लॉक ट्रांजिशन। तो हमारा यहाँ पे जो बनता है वो बनता है द मेमोरी एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंशियल सर्किट इम्प्लीमेंटेड यूजिंग फ्लिप फ्लॉप्स। तो ऑप्शन जो 2 है सीक्वेंशियल, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. द आउटपुट ऑफ अ मेमोरी मशीन डिपेंड्स ऑन द डैश स्टेट एट द इनपुट। प्रेजेंट स्टेट्स या नेक्स्ट स्टेट। Melee machine state diagram. The sequential circuit represented earlier as a mode machine is described as melee machine. The output of the melee machine depends upon the present state at the inputs. The state diagram shows the 6 states. When the input is 1, the machine switches from its present state to the next. If the output is 0, the machine remains in its present state. तो डायग्राम आपको मैंने स्टेट डायग्राम के पीछे एग्जांपल दिखाई थी, ठीक है, और इसका जो आंसर बनता है वो डिपेंड्स ऑन करता है प्रेजेंट स्टेट के ऊपर। तो ऑप्शन जो 1 है ये इसका करेक्ट आंसर है।
Next question number 20. Technically, a register perform dash basic functions. One functions, two functions, या many functions या four functions. Shift register, the need to store binary data was discussed earlier. In the digital circuit, multi-bit data has to be stored temporarily until it is processed. A flip-flop is able to store a single binary bit of information. Technically, a register performs two basic functions. It stores data and it moves or shift data. इसके दो बेसिक फंक्शन हैं, ठीक है। वो डाटा को स्टोर करता है, मूव्स और शिफ्ट डाटा। तो ऑप्शन जो बी है ये इसका टू करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। Data is shifted in the dash direction one bit at a time with each transition of the clock signal. Left hand direction है या right hand direction? Serial in parallel or operation, data is shifted in the left hand direction one bit at a time with each transition of the clock signal. The data enters the shift register serially from the right-hand side and after four clock transition and 4-bit register and 4 bits of data. The data is shifted out in parallel by the application of a single clock signal. The shift register has 4 parallel outputs. तो हमारा जो डाटा शिफ्टेड है वो लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन होगा, ठीक है, 1 बिट के हिसाब से। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन 1 लेफ्ट हैंड ये इसका करेक्ट आंसर। Next, question number 22. The 74HC164 is an MSI dash bit serial in parallel out shift register. 4 bits, 8 bits, 16 bits, या 32 bits. The 74HC164 is an MSI 8 bits serial in parallel out shift register. The shift register has 8 parallel outputs as asynchronics active low CLR input which clears and shift register. The shift register is triggered on the positive clock transition. The serial data is applied through inputs A and B. Input bits A and B are internally connected through an internal NAND gate. The two pins act as a data input and shift register enable inputs. The serial data is applied at either inputs A or B. The other inputs when set to logic high enables the shift operations. तो हमारा जो 74HC164 जो है MSI वो 8 बिट है, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है 8 बिट ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. The serial input of the register by applying clock pulse data is shifted right is known as rotate right operation, rotate left operation, shift register counter या Johnson counter. Rotate right operation. The serial output of the register is connected to the serial input of the register by applying clock pulse. Data is shifted right. The data shifted out of the serial out pin at the right hand side is recirculated back into the shift register input at the left hand side. अब देख लेते हैं हम रोटेट लेफ्ट ऑपरेशन को। द सीरियल डाटा आउटपुट्स of the register is connected to the serial input of the register by clock applying clock pulse. Data is shifted left. Shift register counters. Shift registers counters are basically shift register connected to perform rotate left and rotate right operations. हमारा जो बनता है serial input of the register, तो serial input of the register by applying clock pulse data is shift राइट। तो इसको हम कहलाते हैं रोटेट राइट ऑपरेशन। ये इसका आंसर रोटेट राइट ऑपरेशन ये इसका एक्यूरेट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. शिफ्ट रजिस्टर आर आल्सो यूज्ड एज डैश encoder, mouse, keyboard, speaker, all of these. Application of the shift register. The major application of a shift register is to convert between parallel and serial data. Shift register are also used as keyboard encoder. The two applications of the shift register are discussed. Serial to parallel converter या keyboard encoder. तो जो shift register होता है are also used as वो होता है mouse. कन्वर्टेड विद पैरेलल शिफ्ट रजिस्टर कीबोर्ड, सॉरी कीबोर्ड ऑप्शन जो 2 है कीबोर्ड इनकोडर होता है, ठीक है। इसका कीबोर्ड इनकोडर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25.
The elevator generates the dash output signal to indicate the door. Two outputs हैं, three outputs हैं, four outputs हैं या null of none है. The elevator generates three output signal to indicate the doors open closed है, direction of movement of the elevator है या up and down and the motion of the elevator waiting moving. Door open close है, door is equal to 0 या door is equal to 1. Direction up and down है, direction 0 या direction 1. मूविंग वेटिंग मूविंग मोशन इज इक्वल टू 0 या मोशन इज इक्वल टू 1. तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है थ्री सिग्नल्स आउटपुट सिग्नल्स इंडिकेट्स द डोर. थ्री ऑप्शन जो टू है ये इसका करेक्ट आंसर है. ओके. क्वेश्चन नंबर 26. The U state represent the state when the elevator is moving up. The output of the state are dash. ऑप्शन है 101, ऑप्शन टू है 110, ऑप्शन थ्री है 001 है, ऑप्शन फोर है 111. Upstate, the system switches to upstate U when either a request is received from the second floor request to or a person presses the floor to switch F2. The U state represents the state when the elevator is moving up. The output of the state are 110. डोर वन है, जब वन आएगा तो क्लोज हो जाएगा. मोशन वन है तो मूव हो जाएगा. डायरेक्शन जीरो है तो अप हो जाएगा. तो द आउटपुट ऑफ द स्टेट आर 110. तो ऑप्शन जो टू है 110 ये इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27. NSSR स्टैंड फॉर. तो प्लीज़ आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाजमी सब्सक्राइब करें. North South section road, normal south section road, north south sensor reaction, north south source reaction. NSSR. The NSSR is activated when a car is over either of the four sensors on the north south reactions of the road. EWSR. The EWSR is activated when a car is over either of the four sensors on the east west section of the road. जो EWSR है इसको इसका जो एब्रीविएशन है वो है ईस्ट वेस्ट सेक्शन ऑफ द रोड. और जो NSSR है ये है नॉर्थ साउथ सेक्शन ऑफ द रोड. तो हमारा कौन सा बनता है नॉर्थ साउथ सेक्शन रोड. ऑप्शन जो वन है ये इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. The traffic controller define the TR state variables dash on the clock transition. Dependent upon the clock transition या independent upon the clock transition आज़ादाना या जो depend करता है. Equation definitions. The equation definition for the traffic controller defines the TR state variable dependent upon the clock transition. ये depend करती है उसके clock transition पे. The timer is reset when the state is either NSY2 or EWY2. The circuit diagram of the timer connected to the GAL 16V8 base traffic light controller. तो हमारा जो ऑप्शन बनता है वो बनता है डिपेंडेंट. ऑप्शन जो वन है डिपेंडेंट अपॉन द क्लॉक ट्रांजिशन ये इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. Sequential circuit dash operate without a memory element. ऑप्शन वन है कैन बी ऑपरेट, ऑप्शन टू कैन नॉट बी ऑपरेट और ऑप्शन थ्री है बोथ, दोनों ही हो सकते हैं. ठीक है. तो मेमोरी. द sequential circuit कैन नॉट ऑपरेट विदाउट अ मेमोरी एलिमेंट. Memory elements used in sequential circuit are relatively small and stored for few binary bits of information. Large memories capable of storing very large amount of information are used in computer system. A computer which execute an application program has the application stored in the form of program instruction in large memories. तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है जो सिक्वेंशियल सर्किट होता है ना वो कैन नॉट बी ऑपरेट विदाउट मेमोरी एलिमेंट. ठीक है. वो ऑपरेट नहीं करता मेमोरी एलिमेंट का. तो ऑप्शन जो टू है कैन नॉट ये इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन हमारे पास है 30. Data lines are required to retrieve the information from the memory array during a read operation is known as data signal, address signal, read signal या write signal.
Data signal data lines are required to retrieve the information from the memory array during a read operation and to provide the data that is to be stored in the memory during a write operation. As the memory read or write on the data unit at a time, therefore the data lines should be equal to the number of data bits stored at each addressable location in the memory. ठीक है, तो हमारा जो ये जो डिफाइन बनता है वो डाटा सिग्नल का बनता है, ठीक है, रिट्राइव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेमोरी रे रीड ऑपरेशन इज नोन एज डाटा सिग्नल। ऑप्शन जो वन है डाटा सिग्नल, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। रैम मेमोरीज आर आल्सो नोन एज डैश मेमोरीज। वोलेटाइल मेमोरीज है या नॉन वोलेटाइल मेमोरीज? Memory types, two major categories of memory chips are the random access memory, RAM stand for random access memory, and read-only memory, ROM stand for read-only memory. RAM allows a read or write operations to be carried out at any address. All locations are accessible in equal times. RAM memories do not store permanently data. जो रैम होता है उसके अंदर जो मेमोरी होती है वो परमानेंटली स्टोर नहीं होती। रैम मेमोरीज आर आल्सो नोन एज वोलेटाइल मेमोरी। ROM chips retain data permanently even if the power to the ROM chip is turned off. RAM chips are also known as non-volatile memory chips due to their ability to retain data permanently. Since ROM chips are read-only, therefore user cannot write any information to ROM chips. जो रोम होती है वो रीड करती है ओनली और इसके ऊपर हम राइट नहीं कर सकते। तो जो रोम होती है ना, रीड ओनली मेमोरी, वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। जो रैम होती है वो होती है वोलेटाइल मेमोरी। तो हम रैम का पूछ रहे हैं तो रैम का जो फर्स्ट ऑप्शन है वोलेटाइल मेमोरी, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। Each cell of a static RAM is implemented using a dash, which is the implemented using several MOSFET transistor, D flop, flip flop, SR latch या JK flip flop. Static RAM, each cell of a static RAM is implemented using a flip-flop which is implemented using several MOSFET transistor. External power is required to operate the transistor. As long as the external power is applied, the static memory shall retain the data. तो इसके अंदर जो हमारा ऑप्शन बनता है वो बनता है इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ फ्लिप फ्लॉप, वो यूज करता है। तो फ्लिप फ्लॉप ऑप्शन जो 2 है ये इसका करेक्ट आंसर। आई होप यू आर अंडरस्टूड। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 33 है। लार्ज मेमोरीज सच एज द डैश केबी मेमोरी हैव टू रो एंड कॉलम डिकोडर्स। 8 केबी मेमोरी, 16 केबी मेमोरी, 32 केबी मेमोरी या 64 केबी मेमोरी। Decoding large memory such as 16 KB memory have row and column decoders that split the input address into a row address and a column address and activate a row and column select line respectively. The row and column select line select a location in the memory array. The memory is arrangement in a two-dimensional manner instead of the linear address method discussed earlier. तो हमारा जो बनता है 16 के बी मेमोरी जो यूज होती है रो एंड कॉलम्स डिकोडर्स में, लार्ज मेमोरी सच है 16 के बी। ऑप्शन जो 2 है ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। द वैलिड एड्रेस नीड टू बी मेंटेन्ड स्टेबल फॉर अ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन टू आर सी द डैश टाइम, रीड साइकिल या राइट साइकिल टाइम्स। Memory read cycle. To read data from the memory, the read cycle is initiated by applying the address signal. The valid address need to be maintained stable for a specified duration TRC, the read cycle times. Memory write cycles. To write data to the memory, the write cycle is initiated by applying the address signal. The valid address need to be maintained stable for a specified ड्यूरेशन टी डब्ल्यू सी द राइट साइकिल टाइम। दोनों ही सिमिलर है लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ऊपर वाला जो रीड साइकिल है तो उसको हम डिनोट करेंगे टी आर सी से, नीचे वाला का जो है राइट साइकिल है तो इसको हम टी डब्ल्यू सी से डिनोट करेंगे। तो ये इसके अंदर डिफरेंस है। तो हमारा जो पूछ रहा था आर सी का, इसका मतलब रीड साइकिल है। तो ऑप्शन जो वन है रीड साइकिल इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
35 रैम चिप आर सब डिवाइडेड इनटू डैश टाइप्स। जो रैम होती है उनको डिवाइड किया जाता है सब डिवाइड्स में, 1 टाइप्स, 2 टाइप्स, 3 टाइप्स या 4 टाइप्स। सिंक्रोनस बोस्ट एस रैम। RAM chip are subdivided into asynchronic RAM, ASRAM, and synchronic bost RAM, SBSRAM। ठीक है, दो टाइप्स में इसको डिवाइड किया जाता है। Static memory described is an asynchronous SRAM, the operation of which does not depend upon the clock signal. The read and write operation are carried out synchronously and asynchronously or synchronous. SRAM uses a clock signal which is used by the microprocessor। ये microprocessor use होती है, ठीक है, to synchronize its activates to synchronize the read and write operation for faster operations। तो इसकी टू बनती है, एस्ट्रॉनिक्स रैम है और सेंक्रोनिक्स रैम है। टू के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है, तो ऑप्शन जो टू है ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। The refresh cycles are of two types, RAS only refresh and CAS before RAS refresh। True है या false? RAS only refresh and CAS before RAS refresh। The refresh cycles are of two types, RAS only refresh and CAS before RAS refresh। In the RAS only refresh, the signal goes low, latching the raw address to the refreshed. The CAS signal remains in active high throughout the refresh cycles. An external counter is used to provide the raw addresses for the refresh operations in the CAS before RAS refresh mode। The CAS goes low before RAS goes low। तो ये बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है। RAS only refresh and CAS before RAS refresh। तो ये ट्रू बनता है, तो ऑप्शन जो 1 है ट्रू इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। थोड़ा सा वेट ले रहा है, ठीक है, सॉरी। तो द फ्लैश मेमोरी अरे इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ डैश एंड डैश, कॉलम्स एंड रोज, रोज एंड कॉलम्स, या रोज एंड रोज को अरेंज किया जाता है, या कॉलम्स एंड कॉलम्स। Flash memory array. The flash memory array is arranged in the form of rows and columns. The row line is connected to the control gate of the MOS transistor, which implement a single bit storage cell. The number of such MOS transistors in a row generally depend upon the size of the data value stored at each location। ठीक है, जो फ्लैश मेमोरी रीअरेंज करता है वो रोज एंड कॉलम्स को करता है। ऑप्शन जो टू है, रोज एंड कॉलम्स, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। पता नहीं सिस्टम ज़्यादा बिजी है, मतलब लोड ले रहा है, तो we don't know। The dash memory find application in computer system where it is used to implement a stop। FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेमोरी है, या LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट LIFO memory find application in computer system where it is used to implement a stack। The operation of a stack can be understood by viewing a stack of plates। In a stack of plates, the first plate is placed at the bottom, the next plate placed is placed on the top। एक बॉटम पे ठीक है प्लेस की जाती है, और एक टॉप पे जो थर्ड प्लेट होती है इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द सेकंड प्लेट एंड सो ऑन। इस तरह चलता जाता है। तो हमारा जो लीफो है वो फाइंड एप्लीकेशन करता है कंप्यूटर सिस्टम में। ऑप्शन जो टू है, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। LUT स्टैंड फॉर लुक अप टेबल, लुक यूनिफॉर्म टेबल, लुक यूनियन ट्रांसफर, या लॉस्ट यूनाइटेड ट्रेड। The logic element, the lookup table LUT has four inputs and can be programmed as a logic function generator। जो LUT है ये लुक अप टेबल एब्रीविएशन है, स्टैंड फॉर लुक अप टेबल। ऑप्शन जो 1 है ये इसका आंसर। नेक्स्ट है जो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर है 40। The analog voltage is applied at the input of an AD converter and the binary output is plotted known as। इनकरेक्ट कोड है, मिसिंग कोड है, ऑफसेट एरर है, या नन ऑफ दीज।
The missing code 1001, a linearly increasing analog voltage is applied at the input of an AD converter and the binary output is plotted. Okay, इसको कहते हैं missing code. Incorrect code at the output of the AD converter is due to the particular bit stock at some fixed logic value or offset error. The offset errors occurs when the binary output of the AD converter represent a value which is greater than the actual analog input signal values. तो हमारा जो आंसर बनता है वो बनता है यहाँ पे आंसर बनता है हमारा मिसिंग कोड। ठीक है, इसके अंदर एनालॉग वोल्टेज अप्लाइड एट द इनपुट ऑफ द एडी कन्वर्टर एंड बाइनरी आउटपुट इज प्लॉटेड इज नोन एज मिसिंग कोड। ऑप्शन जो 2 है ये इसका आंसर बनता है। तो बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। तो सब्सक्राइब कर दे अब तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया तो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।